Good morning, students. I Ghanshyam Daiya, PGT Biology, KV number 1 Bikari. Today we will learn a new topic, seed and fruit. Before starting seed and fruit, we have to know what is the transformation of parts of flowers. It means before fertilization and after fertilization, which part of the flower in convert in which parts, like as stigma, corolla, androecium, style and stigma, they all the part after fertilization they are withen off, shed off, यानी ये गिर जाएंगे, इसका कोई रोल नहीं रहेगा. And you know the ovary is convert in fruit. Ovary wall that is in pericarp, यानी ओवरी की जो वाल है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट होएगी. ओव्यूल्स इन सीड, ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. इंटेगुमेंट्स सीड कोट बनाएगा. द सीड कोट में आउटर इंटेगुमेंट्स एंड इनर इंटेगुमेंट. आउटर इंटेगुमेंट्स कन्वर्ट इन टेस्टा, उसको टेस्टा बोलेंगे. एंड इनर इंटेगुमेंट इज आल्सो नोन एज टैगमेन. माइक्रोपाइल एक माइक्रोपाइल यानी एक पोर के रूप में रहेगा, सीड पोर. फनिकल्स स्टाल्क ऑफ द सीड. न्यूसेलस पेरिस्पर्म. न्यूसेलस किसी सीड में रहा तो उसको पेरिस्पर्म कहेंगे. और एग सेल को क्या किस में कन्वर्ट होएगी, वो जाइगोट्स में. और सिनर्जिड दे ऑल आर डिस्टिग्रेट्स एंड डिसअपियर, यानी डिसअपियर हो जाएगा, उसका किसी में कोई रोल नहीं रहेगा. नाउ सीड. What is seed? So seed is the final product of the sexual reproduction. Sexual reproduction में seed बनने के बाद sexual reproduction is the complete. Seed consists of three parts. One is seed coat, cotyledons, and embryo axis. तो किसी भी सीड है उसके अंदर तीन पार्ट हुए. Cotyledons store the reserve food material for the development and germination. कोटिलिडोन्स के अंदर क्या होगा, ये एक रिजर्व फूड के रूप में रहेगा जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए हेल्प करेगा. इन मैच्योरेटेड एग, इन मैच्योरेट सीड विदाउट एंडोस्पर्म इज कॉल्ड नॉन एल्बुमिनस सीड्स. In previous chapter we studied that the albuminous seed and non-albuminous seed. Albuminous seed in non-albuminous seed are those type of seed in which endosperm are consumed by the embryo. एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा. तो ऐसे सीड को हम क्या कहेंगे, नॉन एल्बुमिनस सीड कहेंगे, जो कि ग्राउंड नट में होता है. और दो सीड इन विच एंडोस्पर्म आर प्रेजेंट, एंडोस्पर्म रहेगा, जैसे हमने देखा था कोकोनट के अंदर, तो ऐसे सीड क्या कहलाएंगे, एल्बुमिनस सीड. ए पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योरेटेड सीड, मैच्योर सीड के अंदर भी पाया जाएगा. तो ऐसे सीड क्या कहलाएंगे, एल्बुमिनस सीड. रिमेनस ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन सी, दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म. देखिए in some seeds they having remaining persisted part of the nucellus. nucellus का कुछ पार्ट उसके अंदर चिपका हुआ रह जाता है. तो ऐसा आप देखने को मिलेंगे ब्लैक पेपर के अंदर, बीट के अंदर, ऐसे देखोगे कि उसके अंदर न्यूसेलस का कुछ पार्ट बचा हुआ रह जाता है. दे आर नोन एज पेरिस्पर्म. इट इज द पार्ट ऑफ seed. It is the very important questions arising in various CBSE exam. It is the diagram which can easily see the non-endospermic and endospermic seed. आप बिल्कुल डायग्राम देखें, इसमें इस डायग्राम के अंदर आपको एक येलो कलर के अंदर आपको दिख रहा होगा एंडोस्पर्म. तो जिसमें होता है उसको एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जिनमें नहीं होता उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं. दैट्स क्लियर. इसमें नहीं है, इसमें है.
that is known as non-endospermic and endospermic seed. Now, uh, now the part of the seeds. Integuments of ovule harder as tough protective seed coat. You know about the integuments seed coat, integ testa and tegments. They are outer and inner integuments. They mate the seed coat. They are the protective role of the seed. They protect the seed. The micropyle remain as a small pore in the seed coat. You can easily see in every seed that is small pore like structure. That is the micropiles parts. When we take the waters in the when we take water in a bowl and some seeds are dipped, after some time they are germinate, the water is enter through the micropyle. इन्हीं micropyle से होते हुए पानी अंदर की जाएगा. This facilitate entry of oxygen and water into the seed during germination. Germination के दौरान पानी इसी पोर के द्वारा अंदर की तरफ मूवमेंट करता है. As the seed matures, its water content is reduced and seed become relatively dry. पानी इन्हीं स्पोर के द्वारा बाहर की तरफ निकलता है और जो जो सीड है उसका वेट बहुत कम हो जाता है, उसके अंदर मॉइस्चर कम होता है. द जनरली हम कहें तो द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन. द एम्ब्रियो में एंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिव कॉल्ड डोरमेंसी. आप एक देखेंगे सीड एक ऐसी स्टेज में आ जाता है जब उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, तो हम कहते हैं डोरमेंसी. या इफ द फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी यानी एडुकेट अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर आर कम, देन द सीड इज जर्मिनेटेड. तब ये सीड जर्मिनेट करेगा. That is the diagram of seeds. You can easily see that portion is seed coat, interportion endosperms, that portion is embryo. They having epicotyles and hypocotyles. Epicotyle is that portion with plumules that form the shoot, and radicals is the portion which form root. You can find out everything's in this diagram. That diagram is the uh, structure of the seed. It is the another diagram which can we easily see the seed coat. It is made by the integuments, endosperm, that is the nutritive food, cotyledons. You know in monocot and dicot. In dicot, two cotyledons, and monocot in single cot. It is also the reserve food remain in that portions. It is the structure of maize seed in various CBSE exam. It ask draw the diagram of the monocot seed. You can easily see it is covered by a layer, एक cover है layer के द्वारा, and that portion is known as endosperm, and it is have a scutellum. It is monocot, so that one cotyledons, that is known as scutellum, and that portion is plumules. Plumule is covered by a sheath that is known as coleoptiles, and that is the radicals, and radicals is covered by a sheath that is known as coleorhiza. That is the structures, and all the seeds are covered by a layer, alluron layers. Now, what is fruit? The fruit, a ripened ovary or fertilized ovary is called fruit. It means fertilized ovary है that convert in the fruit. The transformation of ovule into seed and ovary into the fruit proceeds simultaneously. यानी जो ओव्यूल का सीड में बदलना और ओवरी का फ्रूट में बदलना, ये प्रोसेस साथ साथ चलती है. द wall of the ovary develops into the wall of fruit called pericarp. याद रखें, ओवरी की जो वाल है जो एक कवर बनाती है वो फ्रूट का ही कवर होता है, फ्रूट का कवर बनाती है, जिसको क्या कहेंगे,
पेरिकार्प, याद रख लीजिए पेरिकार्प। याद रखें पेरिकार्प के अंदर 3 लेयर होती है। पेरिकार्प हैविंग 3 लेयर, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। आप अलग अलग फ्रूट के अंदर देख सकते हैं, किसी के अंदर फ्लैसी फ्रूट होता है, कोई ड्राई फ्रूट होता है। तो देखें द फ्रूट में बी फ्लैसी लाइक एज गवावा, ऑरेंज, मैंगो, एंड इट मे बी ड्राई लाइक एज ग्राउंडनट, मस्टर्ड्स। इसके अंदर ये किस टाइप से होता है, ये ड्राई भी होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू फ्रूट एंड false fruit? Fruit develops from the ovary is called true fruit. In apple, strawberry and cashew, the thalamus contribute in the fruit formation is called false fruit. यानी true fruit are those fruit which are made by the ovary. ovary से अगर कोई fruit बना है तो it is the true fruit. In other part of the ovary like as thalamus and other any parts, अगर उससे अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है दैट इज द फॉल्स फ्रूट। इन एप्पल और स्ट्रॉबेरी एंड कैजू they are made by the thalamus, it is the base part of the flower, so that type of fruit is known as false fruit. फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर कोई फ्रूट बन रहा है दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। You can see two diagrams, they are showing false fruits. It is apples in another fruit cashew and that is the strawberry. आप देख सकते हैं that are thalamus, they are made by thalamus, so they all are false fruit. The fruit which is made by ovary then true fruit, and without ovary that any part of the flower then that is known as false fruit. What is the meaning of apomixis and polyembryony? Apomixis is very common in Astraceae and Grasses family. सीड आर प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड का फॉर्मेशन होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज एपोमेक्सिस. इट मींस द एपोमेक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मिमिक करता है, अपने आप को दिखाता है, जबकि है क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें किसी भी टाइप का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और सीड का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसी प्रोसेसन कहलाती है एपोमिक्सिस. डिप्लॉइड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस एंड डेवलप इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. डिप्लॉइड एग में मियोसिस होगा नहीं, वो डिप्लॉइड ही रहेगी और उसमें सीधे ही सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता. दैट प्रोसेस इज नोन एज एपोमिक्सिस. यू कैन सी इन सिट्रस, इन मैंगो, the nucellus cell start dividing, protrude into the embryo sac and develop into embryo. आप क्या सिट्रस और मैंगो के अंदर क्या देखेंगे कि जो न्यूसेलर की जो सेल होती है जो कि डिप्लॉइड होती है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर घुस जाती है एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो. तो आप देखोगे कि एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो की जगह एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं. ओव्यूल हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो इज टर्म्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी. Hybrid plant are developed by apomixis to maintain the genetic identity. जेनेटिक आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट एपोमिक्सिस का यूज में करते हैं. थैंक्स.